नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो रिव्यू करें। आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं इनविक्टा एविएटर सीरीज़ मॉडल नंबर 17203। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट टर्म रिव्यू, शॉर्ट term because I've been using this watch for about 6 months, and in today's video I'm going to talk about overall build quality of the watch, some pros and some cons, some technical information about the watch. बट बिफोर वी स्टार्ट द रिव्यू वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट यू विल बी अप टू डेट विद माई नेक्स्ट रिव्यू वीडियोज़ दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो दोस्तों, ये है आपका इनविक्टा का वॉच बॉक्स। बड़ा ही जैजी ब्राइट येलो कलर में ये बॉक्स आता है। इट हैज़ अ गुड फिनिश। अगर आप इसको टच करेंगे तो यू विल फील बिट काइंड ऑफ लाइक लेदराइट फीलिंग आता है। काफ़ी स्मूथ है, स्टिचेस वगैरह काफ़ी अच्छे। सो यू एक्चुअली फील दैट यू आर एक्चुअली होल्डिंग अ गुड प्रीमियम वॉच। इनविक्टा का लोगो यहाँ पे आपके फ्रंट में आता है, एंड इफ़ यू ओपन द बॉक्स यू गेट अ वॉच इनसाइड, एंड आपका यहाँ पे यूज़र मैनुअल एंड वारंटी वगैरह। So let's keep the box aside and let's quickly have a look at the paperwork. So it basically talks about basic settings, movement type, what type of movement are there, what do we mean by quads, what is mechanical, what is automatic. So in case if someone wants to get more information about those, so it's a good piece of information. आपका वाटर रेसिस्टेंट कितना है ये बताता है, एंड देन यू हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट the actual dials of the watch. There are like two sub dials, so उनके function के बारे में ये बताता है. It talks about how does the tachymeter work, and if it's a diver's watch, how to read or how to use the diver's scale. So those information, and we've got a warranty here. I read through the warranty and looks like it has a 3 years of manufacturer's warranty. That means any defect against manufacturing. और उसके अलावा तो कुछ खास है नहीं. सो दिस इज़ इट. साथ में आपको एक लीफलेट आता है विच हैज़ डिफरेंट सेटिंग मोड्स. आपको यू कैन एक्चुअली लुक एट द टाइप ऑफ मूवमेंट, एंड अगेंस्ट ईच मूवमेंट दे हैव मेंशन्ड मॉडल नंबर. और अगर उस मॉडल नंबर के हिसाब से अगर आपको कुछ सेटिंग करनी है, वो क्राउन के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो पूरा आपको इसमें मेंशन किया हुआ है. सो इट्स अ गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. आई थिंक इट अप्लाइज टू ऑल द इनविक्टा वॉचेस, and I think it's one of their standard leaflet that they send with all the Invicta watches. Let's look at the watch itself. Okay, ये हमने बॉक्स को साइड में करा. दिस इज़ हाउ द वॉच लुक्स लाइक. देखने में काफ़ी प्रिटी है और काफ़ी हैवी है. सो पीपल हु वुड लाइक टू वेयर हैवी वॉचेस, काफ़ी बड़े डायल वाले एंड काफ़ी भारी जो हो नो, सो दिस वॉच इज़ डेफिनेटली सूटेबल फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल. I think this watch weighs around 200 and somewhere between 235 to 245 grams. That I had checked, so that's the reason I know that. अगर आप ओवरऑल लुक की बात करेंगे तो इट्स सिल्वर टोन वॉच, प्लस दे हैव अ ब्यूटीफुल रोज़ गोल्ड डायल ऑन टॉप. जो क्राउन भी हैं, तीनों क्राउन आपके ये भी काफ़ी बड़े हैं, एंड इन दोज आर ऑल्सो कोटेड इन द रोज़ गोल्ड टोन. साइड में आपको यहाँ पे इनविक्टा का एक एम्बलम मिलता है विच रियली स्टैंड्स आउट एंड रियली लुक्स गुड. ओवरऑल आपका ये डायल है, इट्स अ ब्लू डायल. आजकल काफ़ी घड़ियों में ब्लू डायल का ट्रेंड चल रहा है, सो दिस इज़ वन ऑफ देम. दिस रियली लुक्स गुड. और आपका इनविक्टा लोगो आपके 3 o'clock के साइड में आता है. यू हैव द डेट फंक्शन, यू हैव द टैकीमीटर फंक्शन. Unfortunately, I cannot check the tachymeter right now because I'm stationary, and in order to check the tachymeter function, you need to be in a moving object like cab or bus, etc. Okay, so ये डायल रोटेट नहीं करता है. It's a very heavy watch. Like I was saying, it weighs around 240 grams.
आपका बक्कल में भी एक इनविक्टा का लोगो आता है. इट हैज़ एडिशनल सेफ्टी. सो ये जो आपका लॉक है, लॉक के ऊपर में आपको ये एडिशनल सेफ्टी आता है, विच इज़ वेरी गुड, एंश्योर्स दैट इट डजंट ओपन दैट क्विकली. वॉच के बैक में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा. एज यू कैन सी in the middle it says Invicta Aviator, all stainless steel. It's again a Japan chronograph, 100-meter water resistant, which is equivalent to 330 feet. And it has a model number 17203. अगर आप बॉटम में देखेंगे, नॉट श्योर इफ यू कैन रीड इट, लेट मी ट्राई टू फोकस. So if you can read it, there is a mention that says flame fusion crystal. Okay, let me talk a bit about flame fusion crystal. जनरली अगर आपने देखा होगा तो वॉचेस में प्राइमरली 3 तरह के ग्लासेस यूज होते हैं. एक होता है आपका एक्रिलिक ग्लास, दूसरा होता है मिनरल ग्लास, और तीसरा होता है सफ़ायर क्रिस्टल. इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा चलने वाला है सफ़ायर क्रिस्टल, बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी और टफनेस एंड स्क्रैच रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी. नाउ इनविक्टा हैज़ कम अप विद देयर ओन मेथड. नो, आई वुडंट से देयर ओन बिकॉज इट्स अ प्रिटी old method which was founded somewhere in 1830s. It's called flame fusion crystal, flame fusion crystal, wherein they use basically oxygen and hydrogen under high pressure, and then they develop a synthetic sapphire crystal. It is not as strong and as good as the actual sapphire crystal, but it solves the purpose. And Invicta claims that it is also scratch proof and all that. So I haven't done the testing on how well it sounds in terms of how well it does actually in terms of scratch resistance. So that will be a different video that we can talk about. ओवरऑल डिमेंशंस की बात करूं मैं आपका, तो ये जो आपका केस है, ओवरऑल आपका वॉच का जो केस है, दैट इज़ अराउंड 48 मिलीमीटर. एनीथिंग ओवर 40 मिलीमीटर लुक्स रियली ह्यूज ऑन योर रिस्ट. सो दिस डेफिनेटली विल लुक हैवी. आपका जो ओवरऑल विथ ऑफ द केस है, दैट इज़ अराउंड 17 mm. एंड इसका जो चेन आता है, दैट ओवरऑल लेंथ इज़ अराउंड 10.5 inches. सो आई हैव अ मीडियम साइज रिस्ट लाइक आई मेंशन. सो मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है, एंड दिस इज़ हाउ द वॉच फील्स. आपका जो टॉप बटन है on top of the crown, that essentially works on the second hand. एक बार प्रेस करने से स्टार्ट हो जाता है, एंड दूसरी बार प्रेस करने से आपका स्टॉप हो जाता है. एंड if you press the bottom button, it essentially resets the seconds hand. And these are interlinked. So आपका ये seconds हो गया, ये minute हो गया, और ये आपका hour हो गया. And this is how the watch looks. One thing to mention about is Invicta as a brand has been in questions a lot. काफ़ी लोग पूछते हैं कि whether it's a Swiss brand or whether it's a US brand. So I would say when Invicta started, back in like 1830s, it was a Swiss company. The founder was a Swiss person. However, in 1983, the company went bankrupt, and that's when they had to sell off this company. The company was doing well. Again in 1991, they had to go through a major reformation. Post that, it was bought by a company in I think Florida, Hollywood. So yes, I mean it was originally founded as Swiss, but अभी इसको आप Swiss watch नहीं बोल सकते. और आपने देखा यहाँ पे पीछे, it clearly says it's a Japan movement. So no, it's not Swiss, but nevertheless it's not a bad watch. It's a really good looking watch. The combination of silver and rose gold really stands out, and like I said, people who are looking for a heavy watch, they can definitely go for this watch. One thing to mention is कि ये
वॉच मैंने यूएस से मंगाया था. सो इट कॉस्टेड मी अराउंड with shipping, handling and everything, it costed me around $100, which is roughly about 7,000 in Indian currency. और अभी के टाइम पे if you check you can get it for lesser price in amazon.com. However, within India, if you look at any of the leading website, Amazon या Flipkart पे चेक करेंगे तो ये घड़ी आपको 10 से 15,000 के रेंज में कहीं भी मिल सकता है. And this is my second Invicta watch, and I can honestly say that in terms of durability, in terms of their look या फिर उनका overall जो usage है, they are pretty strong. इतनी जल्दी कभी ख़राब होता नहीं. जो मेरा पहला Invicta watch था, that was bought somewhere roughly 6 to 8 years हो गया. I've been using that, and I haven't come across any issues, any major issues on that watch, except the replacement of the battery. So this is how the watch looks like. Do let me know what you feel about this watch. I have been using this watch for about 6 months, and so far I have not seen any issues, no disconnect in terms of timings, no lag as well. So overall I would say it's a very good watch, but again, you have to be mindful of the pricing. Check all the website before you buy the product, because the price, like I mentioned, varies from website to website. Or in case if you are able to get one from US, then I guess you can get it for pretty cheap. I think around हाल फिलहाल में इसका रेट around 80 से $100 के बीच में रेंज कर रहा है. So that would be a good deal. So that was everything for today's video. Do let me know if you have any specific questions about the watch in the comment section. और like I said before, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब my channel, so that you will be updated or with the upcoming review videos in future. Okay. So आज के लिए इतना ही. Thank you everyone for watching this video, and do like it. Thank you.